हाँ, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। Recording your पता नहीं यार, स्किप करना था, स्किप नहीं हुआ बराबर से वो। तो कोई ज्वाइन किया है क्या आज हम लोग के अलावा? चार जो दिखा तो रहा है ये। आज थोड़ा मजा आएगा शायद से कि कॉन्फ़िगरेशन करके भी स्कोप रिड्यूस करने वाला ये है आज। बस चालू हो जाए। ये हो गया चालू। ठीक है, तो दिस वन इज कंट्रोलिंग कॉन्फ़िगरेशन स्कोप ऑफ Istio. So basically, by default, Istio networking discipline services are visible to all services running in all namespace. So इससे क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन का जो साइज है, राइट, बहुत इंफीरियर। तो एंड ये कॉन्फ़िगरेशन हर साइडकार के पास होता है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा एप्लीकेशन स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, राइट। तो अगर कोई चेंज हुआ साइड का ये कॉन्फ़िगरेशन, तो वो फिर से बड़ा कॉन्फ़िगरेशन साइड का को डाउनलोड करना पड़ता है। तो दिस इज द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर एंड ये अच्छा नहीं है बेसिकली। So there is something called as a sidecar resource that is designed to solve this problem from service consumer's perspective. This configuration allows you to configure a sidecar proxy that mediates inbound outbound configuration communication to a workload engine. It is applicable to the export to configuration allows service providers to declare the scope. With both of these configurations, service owners can control the scope of the sidecar config. So basically, there is a sidecar resource in Istio that है ना, टाइप करा के साइड sidecar resource राइट। सो ये है साइडकार का पूरा डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स नॉट एप्लीकेबल टू गेटवे। तो ये अपन गेटवे पे नहीं लगा सकते हैं। If you apply it default, so if you apply it in the
mesh config root namespace, it will be applied to all namespaces without a sidecar. So global sidecar configuration should not have any workload flexibility. So इसके है देखो इसको इसके ऑप्शंस है ऐसे सिलेक्ट कर सकता है ये मतलब इग्रेस होस्ट सिलेक्ट कर सकता है वर्कलोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग वर्कलोड से एप्लीकेशन हो गए लाइक सर्विसेज वो सब तो ये है इसका डॉक्यूमेंटेशन इसके सब जो ऑप्शंस है वो भी है इधर सो देखते हैं क्या कर सकते हैं so what we will do is let's declare the services in the Istio and action namespace. Those services are allowed to reach out to the web API service in the Istio namespace as a default sidecar resource below. ठीक है let's declare services in the Istio and action namespace. Those services are allowed to reach out to web API. So this is the default sidecar resource that is created in Istio in action and outbound host is the web API and Istio system and Istio ingress. So let's apply this. Okay, the sidecar. Let us reach the web API from the sleep pod in the Istio in action. Okay, this is working. चल हाँ error processing upstream request recommendation. This is because the web API pod sidecar does not know how to get to the recommendation service. So हम लोग ने आउटबाउंड में सिर्फ वेब एपीआई दिया है ओके सो स्लीप पॉड को मालूम है कि वेब एपीआई तक कैसे रीच करते हैं एंड ये डिफॉल्ट है तो ये सबके लिए एप्लीकेबल हो गया सो if you review the cluster output you can see that the web API pod is not available recommendation so वेब एपीआई के पास नहीं है रिकमेंडेशन का क्लस्टर और देखते हैं स्लीप के पास क्या है so sleep has got web API that's it तो किसके पास भी हाउ टू रीच रिकमेंडेशन का ऑप्शन है ही नहीं कुछ आइडिया नहीं है राइट सो ठीक है लेट्स allow the sidecar to allow all services within the same namespace so within the same namespace we'll apply all okay now it works so now it can access all hosts within this name but what if we try to access we can't access to other namespaces bin dot default dot dot cluster dot doesn't we should see 200 ठीक है this is working it works if you use a cluster configuration for the API pod अब देखो दूसरा वाला भी आ गया
सो ये एंड पॉइंट डिस्कवरी करके यहाँ ऐड हो, ठीक है। रिस्टार्ट द स्लीप पॉड टू स्टार्ट द साइड का प्रॉक्सी, ठीक है। ये डिफॉल्ट नेम स्पेस में कैसा होगा भाई? ठीक है, ट्राई करते हैं। हाँ, अरे हो रहा है। Now reach the web API namespace API service in the sleep pod in the default name. Okay. Doesn't work. You will get 200 status code. No, wait. To wait for it to come up. 2 out of 2 नहीं हुआ अभी तक. No one is terminating. हाँ, अभी चल गया. You will get a 200 status code because the sleep pod in the default namespace doesn't have any sidecar resource. Thus, can see all the configuration for the web API service. Stay in action. In summary, sidecar resource can be used for namespace or by using a label selector per workload or globally. It is recommended to enable it per namespace or workload first before enabling it globally. Sidecar resource controls visibility of configuration and what gets pushed to the sidecar. So sidecar should not be used as a security enforcement. Mm. Okay. Istio authorization policy should be used. Export to configuration for service provider. Service owners can apply export to an virtual service destination during service entry to define a list of namespaces that the Istio networking resources can be applied to. ये नया टॉपिक है, एक्सपोर्ट टू कॉन्फ़िगरेशन. What is this? Other service owners can declare their service visibility via the networking issue or export to annotation. By default, if no export to exists for the issue, they are made available to all namespaces. Its best practice should trim the unnecessary property configuration. As a service owner for recommendation service, you may want to allow the web API service to be available only from the Istio in action, Istio ingress name. ये शायद से एक्सपोर्ट कर सकता है, मतलब सर्विस ओनर कैन एक्सपोर्ट. So service visibility can be exported to other namespaces. रूल्स तो रहेगा इस पे. कॉल कर रहे हैं होस्ट Istio in action to HTTPS Istio in action 443. Okay, so this worked. Now configure the gateway resource and the virtual service resource in Istio in action namespace along with the Istio in action cert. Okay. Now let us try creating the web API gateway resource in Istio ingest namespace and continue to have the web API gateway virtual service in the Istio and action namespace and explore the export tool. First, let us delete the web API gateway resource. Okay. So first हम लोग gateway resource को delete. Right, gateway resource deleted. Okay. Okay. Now we will create the same gateway resource in the पहले देखते हैं इसमें क्या है. So this namespace is Istio in ingress. बाकी सब तो सेम लगता है.
Okay, update the web API gateway first in the Istio and Istio namespace under the gateway section to refer to the web API in the Istio ingress namespace. So we have to. So this virtual service will basically contact the web API in Istio in action, but we are in Istio in ingress. So gateway got changed here to Istio ingress web API gateway. Apply the virtual service. So gateway is in one namespace and virtual services in another namespace. And we have to do so this still works. Nice. Check the route configuration for Istio ingress gateway and the Istio system namespace. Istio Patel PC route deploy ingress gateway. Okay. We can see two are there now. One is 243 HTTPS Web API gateway Istio ingress. Okay. Now, as a web API services provider, you want to limit its virtual service scope to within the current namespace with the export to configuration. Okay. So this is an Istio in action, and if we apply this, we have this new thing called export to, which is only current namespace, right? And okay, now let us check the route. Okay, route is still there, but now we are getting 404 the virtual service. So basically, that this can't see this fellow now, this service. So if we send a request, right, we should get 404, right? 404 because we can't figure out where this guy is. So virtual service is only exported to the current namespace that is Istio in action, but our gateway is in Istio-this. So between namespaces, it doesn't know how to route. Right, and we confirmed also that we can see 404. Let's undo the export to configuration. Now it works. Now let's check the clusters. LPST action is in the list of services. Okay. Add the networking Istio export to annotation to the web API service to specify it put it to the deployed namespace. What we did is we applied the export to annotation, okay, for service that is web API service. Okay, so now this is not virtual service, this is actual service, Kubernetes or a service. Mhm. And we have told it that we want to export it only to the current namespace, and that is Istio in action. Where this service is, we get SCP. So web API is in Istio in action. Okay. Do you think you will be able to reach the web-API via Istio in this gateway? So let's try. चल तो रहा है बट ये बोल रहा है कि you won't because the web API is declared fully exposed to the Istio in action. तो गड़बड़ है.
Is this supposed to be virtual service or is this supposed to be service? There is service to specify service to like. Do you think you will be able to use the web API service via Istio in this gateway? You won't. Because अभी भी है ये तो सेकंड के लिए लैब का देखते हैं कुछ टूल के नहीं इसमें तो कुछ झोल नहीं है कि गेट SVC and Istio annotation भी तो है so why it is not working तो झोल है ये भी दिख ही रहा है अभी तक कंपाउंड कुछ मिस किया क्या मतलब ये भी तो है ही तो इसको पहले गूगल सर्च करते हैं टॉकिंग तो सर्विस एंट्री है मेरे को तो सर्विस पे एनोटेशंस ये तो सर्विस पे ही आता है यार वैल्यू ऑफ दिस इंडिकेट्स दिस वैल्यू ऑफ indicates it is reachable within the mesh indicates reachable within its namespace ये नहीं चल रहा मतलब स्टे पर ही रख रहा है क्यों नहीं चल रहा सर्विस सो ये अभी अपन डिप्लॉयमेंट स्टे इंजर्स कैसे इसका पहले लॉग लॉग एफ एन इंजर्स कुछ रिस्टार्ट करना है क्या नहीं ऐसा तो लग नहीं रहा मेरे को
ये भी बोल रहा है इसको भी नहीं चल रहा है। अच्छा तो ये अभी तक चल नहीं रहा शायद गेटवे पे। ये गेटवे ये है ना ये इंटेंस गेटवे ये शायद। हाँ ये इंटेंस गेटवे पे नहीं चलता है मतलब। इसका तो बग भी है। ये दिख रहा है स्टेप्स रिप्रोड्यूस आला इसमें नोटेशन। हाँ रे इसमें भी बोला है क्लियर मतलब फिक्स नहीं है शायद से। सोलो के रेपो में है ये ओपन। हम्म। ये लैब का इस्टियो वर्जन क्या है? तेरे नहीं चल रहा। 1.16 में नहीं चलता ये। हम्म। ओके इसके लिए नहीं चल रहा। ठीक है मूव ऑन करते। अंडो किया। नाउ वी विल डू वर्चुअल सर्विस merging. Okay. Istio supports simple virtual service resource merging to the same host. Okay. kubectl apply iterated deployment and service. You should see the hello world for तो तेरा कैसा चल रहा है पढ़ाई अभी? कौन सा ये? हम्म। फॉलो अप तो नहीं हुआ अभी तक। मैं अभी इसमें हूँ, इनवाई पे ही अटका हूँ। चैनल पे क्या कर रहा हम्म। है ऑनवे में क्या कर रहा है? अभी इनवाई पे लैब शुरू करने जा रहा हूँ कि एक्चुअली में। तो अभी क्या है कि टर्मिनोलॉजीज है ना कुछ उसकी, तो वो थोड़ा सा हाँ। क्लियर कर, लाइक वही क्लस्टर्स मैश वगैरह। तो साथ में थोड़ा डॉक्यूमेंट भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अपनी लैंग्वेज में भी थोड़ा सा वो डॉक्यूमेंट रहे, थोड़ा सा कि समझ जाऊँ तुरंत, लाइक वापस रिफ्रेश करने के लिए ना। अच्छा तो क्या ऑनलाइन की तरह डॉक्यूमेंट कर रही है? नहीं नहीं, वो जो है ना सोलो अकेडमी की, क्या बोलते हैं इसको, हाँ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट। ये नोशन पे यार, नोशन पे, ब्लॉग ब्लॉग पे नहीं, लाइक नोशन पे। क्योंकि अभी वाली वो पूरी जो अच्छा है। प्रोडक्शन वाली जो लैब थी, इसमें कुछ जगहों पे हमने देखा है ना कि यार इनवाई यूज हुआ है, लाइक फिल्टर विल्टर था कुछ, है ना। हाँ ऑनवे फिल्टर वही काम में आता है अगर हाँ तो थोड़ा अगर बहुत तो। इस्टियो में फंक्शन नहीं है तो। हम्म। तो ये हेलो वर्ल्ड का हो गया। डिप्लॉय दिस। ये लास्ट वाला क्या लैब है डीबगिंग। उनका आज कैसे खत्म करना है? एडीबी चाहिए तो अभी वही चल रहा है लास्ट। ठीक है डिप्लॉय दिस हेलो वर्ल्ड सेंड सम ट्रैफिक to get it works. दोनों में फर्क क्या है? वन इज अच्छा वन इज नॉर्मल and one is HTTPS. The second one is also HTTP 2. One is HTTP 1 and one is HTTP 2.
हाँ शायद से वो एच टी टी पी एस है। बोले। क्या है? हाँ ये एच टी टी पी एस है, ये एच टी टी पी है। हाँ। We should receive some hello। हम्म। ठीक है, अगर एच टी टी पी एस, हाँ अच्छा, ऐसे लिख दिया था मैंने। send some traffic to your relationship, you should see the 200 status code STOD successfully merge the virtual services। ठीक है। So if there are two virtual services, हम्म। हमने तो एक ही क्रिएट किया ना। ओके, दो होस्ट है, तो you should receive some hello messages and इसमें देखो Istio and action का ही डोमेन है, बट इफ यू डू स्लैश हेलो तो ये ऑटोमेटिकली मर्ज कर देता है वर्चुअल सर्विस को सेम डोमेन के लिए। ओके, ओके। बट है तो दो, बट आई थिंक इंटरनली मर्ज हो जाता है। ओके, अभी डीबगिंग, चलो ऑन टाइम पे यहाँ पर आज लास्ट वाला करेंगे, तो ये फिर आइडिया ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, सही है। तो डीबगिंग के लिए अपने पास है एचटीओ कटल एनालाइज। डिफॉल्ट पोर्ट admin 15,000 does not follow naming convention of एचटीओ पोर्ट। ठीक है, सो एचटीओ पोर्ट में नाम लगता है। This will output a set of reports about the state of the HTML, but that you can safely ignore the warning। तो अभी के लिए warning तो नहीं दिखा। Please see the HTML documentation about HTML CTL analyze। Okay. So then there is HTML X describe, experimental describe, with lot of configurations affecting the edge between two services. It can be helpful to ask HTML what configurations apply to. You can do exactly. So what configuration? Where's the web service? हम्म। So ये service पे है, port 8080 targets for RBAC and skipping gateway। This command can make it apparent when a configuration you intended to affect a service is present or not, and give you indications of which resources to review। Then we have HTOCTL proxy status। अच्छा, तो ये भी बताता है कि वर्जन कौन सा है, सिंक कब हुआ है। ओके, सो वर्कलोड्स का सब इंफॉर्मेशन। Most powerful part of the proxy status is being able to detect drift between control plane and data plane। So, so we can do drift like check अगर sync नहीं हुआ है, last हम्म। sync करता हो। और नाइस। ये है HTTP कटल proxy config। HTTP proxy config command allows you to review the data plane configuration, which effectively comes in the config term files। We can go right to the admin point, HTTP कटल dashboard, envoy dashboard tab। So this is the admin portal of Envoy. So yeah, you can see things like logging. You can change. You can reset all the counters. Server info, stats मिलता है. Stats Prometheus important, हम्म। and you can do stats.
You can get logs, you can get hot restart version, config dump. So config dump is सबसे like important, like where you can get the entire Envoy configuration for Okay. Whole mesh, right? Configure whole mesh. whole mesh. नहीं, it will be only for this Which one? proxy, I think, for the proxy. So I think it's for the Ingress gateway, not sure. So HTML dashboard Envoy deploy sleep. So I think it's for the Ingress gateway mostly. This is all Envoy clusters. Admin can give of all. So then we have logging. We can just change the logging level for a particular pod to change the proxy config level for web API to level debug. To configure just a specific module, we can do so. Then we can give like this, like module name and level. That's good. So yeah, so we will only give these loggers the debug and all. And the last one is debug interface. So we have Istio provides a nice debug interface to the Istio control plane. We can call it with the convenience command pilot discovery like we did in previous lab. We can also call it with a call. So let's see what this is. So you can get a debug interface here and you can see a lot of things. So you can Hmm. see the path for debugging in the documentation. One example is to get the EDS debug info for the HTTP bin. So if we just run this, this proxy not connected to this pilot instance. It must be connected to some other instance. Okay, must be some temporary issue. Let's see Prometheus metrics. Prometheus metrics, you can get all the Prometheus metrics. You can also get the HTOD version. This will come like in use when we are actually doing HTO stuff. You can get the full HTOD version also. So yeah, that, that's it for this lab. So full stuff. Last two are a bit advanced and then I need to like check it out again. But yeah, this is it for zero to production and HTO. काफी So what do you think? लास्ट वाला सच में ऊपर से गया है भाई. कंट्रोलिंग कॉन्फ़िगरेशन. Ah, last to thoda advanced है रे. Like it's like only if you have worked with HTO at least little, then you will be हम्म. able to हाँ. get a hold of what is happening. हाँ, But या. yeah.
like we'll do it now. We'll be learning Istio, so चलो that ये time we ठीक। can. ये क्रैश कोर्स जैसा टाइप का था, हल्का सा क्रैश कोर्स। हाँ, कुछ ऐसा ही था। एक बार ये मालूम पड़ गया तो फिर मालूम पड़ जाएगा। किधर क्या लग रहा है। अच्छा पता है क्या, एक चीज मेरे को समझ नहीं आती अभी, मेरा थोड़ा सा वायर करने की कोशिश कर रहा हूँ ये जितने भी सीआरडी है ना आईस्टीओ के अंदर अभी, तो लेट्स से वर्चुअल सर्विस है और वर्सेस क्यूबरनेटीज वाली सर्विस है, राइट। तो मेरे को ये बताओ कि वर्चुअल सर्विस का लाइक यही रोल है ना कि इट कनेक्ट्स वन सर्विस टू अदर सर्विस, राइट। हाँ, मतलब यू कैन डू पाथ बेस्ड मैचिंग, ये सब सर्विस पे, हम्म। सो वर्चुअल सर्विस। वर्चुअल वर्चुअल सर्विस ही जो होती है वो म्यूचुअल टीयर्स वाला उसके ऊपर होता है कि साइड कार के ऊपर होता है। आई गेस हाँ, म्यूचुअल सर्विस मे बी हाँ, मतलब टेक्निकली एमटीएलएस साइड का टू साइड का होता साइड कार। ओके, एक सेकंड, एक सेकंड मैंने एक, ठीक है। ट्रैफिक मैनेजमेंट इस्टियो, ठीक है। ठीक है, ओके। सो वर्चुअल सर्विस में वी ऑल्सो ऐड द डेस्टिनेशन सर्विस एंड पॉइंट, राइट। डेस्टिनेशन वाले में आई डोंट नो लाइक है। समझा नहीं मैं क्या, क्या बोल रहा। देखो वर्चुअल सर्विस में डेस्टिनेशन है, राइट, एक हाँ, होना चाहिए वर्चुअल सीआरडी सर्विस खोल लो। पर। हाँ, हाँ उसका सीआरडी खोल लो एक बार, देखते हैं। हम्म, ठीक है। ये केवन रूल टू अप्लाई। ओके, सो ये रूट के अंदर डेस्टिनेशन ये है एंड दिस होस्ट इज बेसिकली नथिंग बट द सर्विस नेम, सर्विस का डीएनएस। ये कुछ भी रह सकता है। हाँ ये अच्छा, हाँ लाइक तो एनीथिंग विच इज कुछ भी रीचेबल, राइट फ्रॉम। रह हम्म, सकता आवाज कट रही है, है। ये आवाज। कुछ नहीं सुन पा रहा हूँ। आवाज आ रहा है दो मेरा। दो,
आ रहा। दो तो लियन हो गए हैं। हाँ ये कौन है, तो निकाल भी नहीं सकते, निकाल देते बस तो। अब ठीक है। अब ठीक है। मेरा वाईफाई का क्या लोचा हो गया क्या मालूम। ये कुछ भी रह सकता है रे, हम्म। तो जरूरी नहीं है कि ये क्लस्टर नहीं। लोकल हो, ये कोई भी डोमेन हो। लाइक एक्सटर्नल सर्विस भी हो सकती है, एक्सटर्नल डीएनएस टाइप का कुछ भी। हाँ एक्सटर्नल मालूम नहीं, एक्सटर्नल के लिए शायद से सर्विस एंट्री लगता है या वर्चुअल सर्विस लगता है, तो अच्छा। डेस्टिनेशन रूल लगता है शायद। अच्छा। हाँ, नहीं सही कह रहे हो, ये एक्सटर्नल सर्विस एंट्री। सर्विसेज के लिए। हाँ, ये सर्विस एंट्री लग रही है। ये दिया है इधर सर्विस एंट्री के अंदर। अच्छा, सर्विस एंट्री का जो नाम देंगे फिर वो यहाँ पे दे सकते हैं, राइट, होस्ट के अंदर, ऐसा कुछ। हाँ मतलब राउटिंग के लिए वो, ये तो मेटा डेटा वाला नाम है। मेटाडेटा वाला नाम है। हम्म। बिकॉज अगर ये देंगे तो इसी के ऊपर वो फिर जो भी इन्फोर्समेंट लगाना होगा वो भी किया जा सकता है। क्योंकि अगर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं ना हम तो एक्सटर्नल वाला, बट सर्विस एंट्री बना के शायद क्रिएट करेंगे तो मे बी वो इस जो के कुछ फीचर वो ऐड कर पाए, लाइक इन्फोर्समेंट जैसा, राउटिंग जैसा कुछ। देखते हैं ना अपन, जब भी ट्राई करेंगे तो ये सब आएगा ही। हाँ, नहीं नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लेट्स सी कि क्या है ये, राइट, देखेंगे इसको, मेक श्योर वगैरह। हाँ इसलिए मैंने बोला ना, इस हम्म। ट्यूटोरियल में क्या है कि चलता है, सब चलता है, बट हम्म। फिर रिकलेक्शन नहीं होता कि क्या किधर आता है। मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है कि सर्विस एंट्री के लिए क्या है हम्म। और डेस्टिनेशन रूल क्या है। ये सब जब भी करेंगे ना, तभी मेन स्टार्ट होगा। लाइक अभी कल एक। से कि मालूम नहीं, नेक्स्ट वीक से हम्म। तब से देखेंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं जो ऐसे सिनेरियोज को मतलब ला सकते हैं हम हम्म। लोग। हाँ, सो एक काम कर सकते हैं, जैसे मान लो ये इस्टियो इंटरनल टाइप का है ना, कि सीआरटी कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, इंटर रिलेटेड कैसे हैं। मतलब सपोज करो अभी हमने गेटवे बनाया, सर्विस अकाउंट बनाया, और भी क्या था वो, मैं भूल रहा हूँ कुछ वर्चुअल सीआरटी सर्विस। के नाम। हाँ, वर्चुअल सर्विस हो गए और ये सब हो गए, तो इंटरनली जैसे कि ठीक है, इंटरनली तो वो शायद आईपी टेबल कुछ बना रहा होगा, राइट। तो लाइक कैसे वो लोग इंटर रिलेटेड हैं, क्या उनका वो है, लाइक डॉक्यूमेंटेशन में तो है ही है, बट हम लोग भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं इंटरनली क्या है वो, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ वो तो मैंने भी देखा है अभी तक, तो मुझे भी थोड़ा ढूंढना पड़ेगा इसके। वो थोड़ा कुछ रिसोर्स ढूंढना पड़ेगा, हम लोग ढूंढ सकते हैं कि बिहाइंड द सीन जैसे वो वाला था ना, ये पॉड टू पॉड, पॉड टू पॉड डिफरेंट नेम स्पेस वाला था, है ना, नोट टू नोट कनेक्शन वाला, जो पीछे बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है ना, वैसे ही टाइप का इस्टियो में भी, मतलब एक बहुत डिटेल में नहीं, बट एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम जैसे बन सकता है, या फिर कुछ बता सकते हैं कि कैसे वायरिंग हो रही है बिहाइंड द सीन, हाँ वो कर सकते हैं अपन। है ना। तो वो फिर हम लोग को ट्रबल शूटिंग में थोड़ा सा और भी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कि चलो पता रहेगा कि अगर ये खराब हो रहा है तो वो दो तीन भी खराब हो सकते हैं, ऐसा टाइप का। हाँ कर सकते हैं वैसे तो। मैं एक शेयर करता हूँ, मेरे को एक वो मिला था, हम लोग ऐसा कुछ सोलो। डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, प्लान करके, प्लान क्या प्लान है अभी नेक्स्ट वीक का, तो हम्म। उसमें कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये सही रहेगा, ये स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जैसे ये अलग है ना, स्टेप बाय स्टेप, तो ये टाइमली फिनिश हो गया।
हाँ वो सब डिबगिंग में ऐसा स्टेप बाय स्टेप नहीं देगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम भी आएगा, तो कम टाइम देगा। उसमें तो उसमें तो क्या पता। हाँ, वो तो डिपेंड करता है उस पर कि कितना समय लग रहा है उसमें। मैं पहले तो शेयर ये करता फिगर हूँ। आउट करने की करना क्या है अभी कल से। हाँ, एक एक सेकंड में देखता हूँ। ये एनीवेज फिर हम लोग का डिस्कस करते हैं फिर क्या करना है इसको। इसको ना मैं ऐसे एंड ब्रॉडकास्ट करूंगा ना, तो पूरा हम्म। स्ट्रीम ही बन जाता है। ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ लाइव ब्रॉडकास्ट ही बन सकता। अच्छा, ऐसा नहीं होता है इसमें? नहीं, वो वियर्ड है थोड़ा। अरे कोई नहीं, मीट पे कनेक्ट कर देंगे, इसमें क्या। हाँ डिसाइड करते हैं ना कि क्या अभी नेक्स्ट करना है, वैसे भी डिसाइड तो करना ही पड़ेगा। वो जरूरी है क्योंकि विदाउट उसके फिर हम लोग ऐसे गोल गोल घूमते रह जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। हाँ फर्स्ट थिंग तो लोकल क्लस्टर में इंस्टॉल करना पड़ेगा हाँ, Istio लोकल को। लोकल लोकल बेस्ट है, लोकल बेस्ट है। ये एक शेयर किया है लिंक, इसमें क्या मैं होगा। इसको कॉपी कैसे करूँ? एक सेकंड इसको में मैं प्राइवेट भेज। चैट में भेजना। हाँ, मैं भेज रहा हूँ, वहाँ भेज दिया ताकि जो भी देखे उसको भी मिल जाए। ये अच्छा लिखा है, इसमें अच्छा लिखा है बंदे ने, काफ़ी बढ़िया लिखा है। अच्छा कैस ने लिखा है ये। वो हम्म। वो हम लोग का बहुत क्या होता है नॉलेजेबल ये है यहाँ पर एपैक में। अच्छा, नाइस नाइस। हाँ, इसका इस बंदे का उसको लाइक लिंक्डइन पे भी डालता है काफ़ी कुछ ये। वेरी इसके नॉलेजेबल है। अब हम लोग सब मोस्टली इससे ही पूछते हैं कभी कभी, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन है उसके। अच्छा। ये फील्ड बहुत सीखा इंजीनियर है है। उसने। हाँ हाँ। फील्ड इंजीनियर लाइक इन द सेंस क्या होता है फील्ड इंजीनियर का, बोले तो? सो फील्ड इंजीनियर जैसे कि फील्ड में मतलब प्री सेल्स और इंजीनियरिंग और वो सब रहता है ना वैसा है। हम्म। तो मोस्टली ये लोग फील्ड में ही रहते हैं, जैसे कि कस्टमर नीड्स आई थिंक वैसे। तो वो फील्ड इंजीनियरिंग है। मतलब कस्टमर की ऑफिस ऑफिस जाना, लाइक उनके प्लेस पे जाना, हाँ हम लोग को अगर ऐसा नीड है तो। नीड है। वरना नहीं है ऐसा, जरूरी नहीं है, बट ऐसा नीड रहेगा तो जाते हैं लोग कॉन्फ्रेंसेस या मीट एंड ग्रीट कस्टमर्स के साथ। अच्छा। देखो इतना भी नहीं मालूम फील्ड इंजीनियरिंग का एग्जैक्ट क्या है रोल, बट हाँ। मोस्टली है वैसे कि कस्टमर्स के साथ जाके मिलो, हम्म। पीओसी करो कस्टमर्स के लिए। अच्छा, ऐसा होता है, लाइक ऐसा भी होता होगा ना, लोग कुछ लोग डेटा सेंटर्स में, क्योंकि ईस्टियो मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली, बट इनवॉय हम लोग तो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ईस्टियो कैसा है कि आई गेस स्पेसिफिकली क्यूबरनेटीज के लिए है ना? हाँ मोस्टली तो इस्टियो, हम्म। एक्चुअली इस्टियो वीएम भी सपोर्ट करता है, वीएम हम्म। वर्कलोड। अच्छा। और मेरे को इतना मालूम नहीं बराबर से, क्योंकि है वीएम का भी वर्कलोड का होता है इस्टियो में। हम्म। ये हो सकता है definitely। ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करो उनका प्राइवेट क्लस्टर होते हैं वो जो ऑन इस्टियो प्रेम का वाले। वर्चुअल मशीन का भी है। यही है क्या ये? हाँ ऑटोमेटेड वर्कलोड एंट्री क्रिएशन कॉन्फ़िगर इन वीएम नेमस्पेस, वीएम का नेमस्पेस। है बहुत कुछ है यार। ऐसा देख, इस्टियो साइडकार का पैकेज आता है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा विद इस्टियो, हम्म। ओके। विद वर्क वीएम मतलब ऑन द वीएम, वीएम। फिर कर सकता है।
ओ नाइस। वीएम का तो भी हो है। सकता है कि तो हो सकता है कि उनके पास भी डेटा सेंटर्स होते हो, क्लाइंट के पास ही होते हैं ना, जो जिनको हेल्थ केयर वाले लोग होते हैं, गवर्नमेंट वाले होते हैं, बहुत सारे। हाँ। वो लोग काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होता होगा वहाँ पे ना, तो इसलिए वजह से शायद बंदों को उन्हीं के नेटवर्क में काम करने को मिलता होगा। नहीं, वीपीएन तो लगा सकते हैं, वीपीएन भी लगा सकते हैं। नहीं, डेटा सेंटर मोस्टली रहता है, डेटा सेंटर भी काम होता है। हम्म। हाँ नहीं, वही बोल रहा हूँ, उनके नेटवर्क पे रहता होगा, रिस्ट्रिक्टेड होता होगा। तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं रे, डेटा सेंटर वालों को भी रहता है काम। उन लोग का भी मोस्टली मेंटेनेंस रहता है, हम्म। स्विच चेंज करने का रहता है, अच्छा। चैसिस चेंज, किसका? बहुत कुछ। ये इसमें फील्ड इंजीनियर्स का? नहीं नहीं, फील्ड इंजीनियर डेटा सेंटर में। फील्ड इंजीनियरिंग ऐसा नहीं है, फील्ड इंजीनियरिंग का रोल ही अलग है। हाँ। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा था फील्ड इंजीनियर, लाइक मैं अभी तक ये समझ रहा था कि, अज्यूम ये कर रहा था कि फील्ड इंजीनियर टाइप का वो बंदा लाइक ऑन साइट जाता होगा, मैं ऐसा सोच रहा था। नहीं नहीं, वैसा नहीं है फील्ड इंजीनियर। जॉब जेडी देखनी थी। वो एक्टिंग इन टाइटल रहता इंस्टॉलेशन। है रे, पर हर हर किसी का क्या बोलता है, हाँ हाँ हाँ। सो डिस्क्रिप्शन आई अलग गेस। होता है। हाँ, यहाँ पे देखो, फील्ड इंजीनियर ड्यूटीज यूजुअली इंक्लूड इंस्पेक्टिंग एंड इंस्टॉलिंग इक्विपमेंट and new technologies, directing crews or workers on site, conducting research. फील्ड इंजीनियर, अच्छा अभी टेक्निकल सपोर्ट को इंडिया बना दिया ना। पहले तो फुल था, लाइक हम्म। कोई भी अप्लाई कर सकता था। अभी शायद से सिर्फ इंडिया रखा है, इंडिया रिमोट। नाइस। सही है यार। नाइस। ये ग्रीन हाउस में दिखना चाहिए फील्ड इंजीनियर। वो है क्या फील्ड इंजीनियर टाइप का? नहीं, ओपनिंग नहीं है अभी इसके लिए, नहीं है इधर। हाँ। हाँ, यहाँ पे कुछ और होगा उसका। फील्ड इंजीनियर ये है, तो हाँ ये है। एक जॉब स्किल्स क्वालिफाई सेल्स, तो टेक्निकल भी है सेल्स भी है, दोनों मिक्स है। हम्म। अच्छा। डेमोन्स्ट्रेशन बोथ वर्चुअल इन पर्सन, अच्छा अच्छा। हाँ देखो, इन पर्सन भी है, जाना पड़ेगा बंदे को। प्लान एंड एग्जीक्यूट प्रूफ्स ऑफ वैल्यूज टू वैलिडेट रिलेशन, अच्छा अच्छा। कस्टमर इन्वायरमेंट्स, विद इन कस्टमर इन्वायरमेंट्स, वही बंदा लाइक हो सकता है पर इसके अंदर। लिए नहीं है मोस्टली। मेनली अभी ओपनिंग सा फॉर कस्टमर सक्सेस इंजीनियर एंड टेक्निकल सपोर्ट। बाकी सब सीनियर रोल्स है। सीनियर, वर्किंग सीनियर नॉलेज। गोलैंग। इसमें इसमें ये भी है यार, गोलैंग का भी दिया है फील्ड इंजीनियर में ना। हाँ, क्योंकि मोस्टली कुबरनेटिस एंड सब रिलेटेड टू कुबरनेटिस गोलैंग है ना। तो उसके लिए थोड़ा तो लगता ही एक्सपीरियंस। इसके लिए मैंने भी अभी स्टार्ट किया है चालू। एनीवेज यार, ओके। मेरा तो टाइम हो गया है, 9 बज के, तो मैं अभी चलो चला। ठीक है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। चलो फिर मिलते ठीक हैं बाद है। में, देखते हैं। ओके ओके ओके। ठीक है bro। चलो।